Hello students, this is Preeti Ghosh and this is part 4 of chapter 2 components of food. Today we are going to discuss about deficiency diseases. That is what happens when there is a deficiency of carbohydrate, fats, protein, vitamins and minerals. So let's find out. First we will discuss about what are deficiency diseases. ठीक है? So a disease caused due to lack of one or more nutrient in the diet is called deficiency disease or nutritional disorder. What does it mean? It means कोई disease किस वजह से हो रही है? किसी एक न्यूट्रिशन की कमी से, किसी एक न्यूट्रिएंट की कमी से, जो हम खाना ले रहे हैं उसमें किसी एक न्यूट्रिएंट की कमी से अगर कोई डिजीज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज और न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर. नाउ डेफिशिएंसी डिजीजेस आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. मतलब वो डिजीजेस जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं हो रहा. That is, these diseases cannot be transmitted from one person to another person. Okay, so here you can see that a child is not able to get enough of nutrients and that's why he is suffering from deficiency diseases. Now, there are 3 types of deficiency diseases. What are those? One is protein energy deficiency disease or protein energy malnutrition, also PEM, short form of protein energy malnutrition. Then next is mineral deficiency disease and next vitamin deficiency diseases. So these are the 3 types of deficiency diseases. First, we will discuss deficiency of carbohydrates. What happens when there is a deficiency of carbohydrates? As we already know, carbohydrates are the chief source of energy needed by our body. उससे हमें जो एनर्जी चाहिए बॉडी को वो मिलता है कार्बोहाइड्रेट से. ठीक है? So here you can see these are the sources of carbohydrates. Banana, maize, from where we get the chief source of energy needed by our body. Now, if a diet that contains less than the required amount of carbohydrate, then that is called carbohydrate deficient diet. जिस खाने में कार्बोहाइड्रेट जितना चाहिए उससे कम हो, that diet is called carbohydrate deficient diet. Clear? Now what will happen if we consume carbon deficient diet? We will suffer from journal weakness and lack of stamina. Also cannot bear any physical or mental strain. तो हम जनरली वीक हो जाएगा, हमारा इम्यूनिटी पावर, हमारा स्टेमिना बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा. इनफैक्ट हम फिजिकली और मेंटली कोई स्ट्रेन नहीं ले पाएंगे. सो वी विल नॉट गेट एनी एनर्जी, सो वी विल नॉट बी एबल टू डू एनी वर्क. मेंटली भी कोई स्ट्रेन नहीं ले पाएंगे, फिजिकली भी कोई स्ट्रेन नहीं ले पाएंगे. ओके, सो दिस विल हैपन व्हेन देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट. Moving on to deficiency of fats. Now, like carbohydrates, fats also provide energy to our body. So what are the sources of fats? These are the sources of fat: egg, milk. So now if there is a deficiency of fat, it will cause body weakness and loss of stamina, just like what carbohydrates were doing to our body. Lack of carbohydrates doing to our body, that we will not get any energy, because फैट्स और कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है. तो अगर हमें एनर्जी नहीं मिलेगा तो हमारे जो स्टेमिना है वो बहुत वीक हो जाएगा. नाउ देयर इज ऑल्सो अनदर पॉइंट दैट शुड बी नोटेड इज excessive intake of fats or oil is very harmful to our body.
अब ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए. क्यों? बिकॉज द एक्सेसिव or the excess fat get deposit in the body tissues and causes obesity. वो एक ऐसा कंडीशन पैदा कर देता है that is called obesity. And we have already read about obesity in our previous video that it causes heart disease and high blood pressure. If you haven't seen the previous videos, the link is given in the description box. Next is deficiency of proteins. Now, protein deficiency leads to severe malnutrition in children. What kind of case does it arise? It arises a case called PEM. Protein energy malnutrition is caused by the deficiency of protein and carbohydrates. तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से क्या होता है? PEM होता है, that is protein energy malnutrition. Now in children it causes two types of diseases. First one is kwashiorkor and the second one is marasmus. Okay, now let us discuss each of them. First we will read about kwashiorkor. Now kwashiorkor is caused by the deficiency of protein and carbohydrate in diet, and this disease occurs mostly in the children of 1 to 5 years of age. So ये mostly 1 से लेके 5 साल के बच्चों में होता है and causes because of deficiency of proteins and carbohydrates. तो इनके symptoms क्या क्या है? First is irritable with pathetic facial looks, skin cracks and becomes scaly, swollen abdomen and weak legs, hair turns reddish, lower body weight and retarded growth. तो क्या क्या होता है? फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ही इरिटेटेड रहते हैं, स्किन फट जाती है और उनके में स्केल्स आ जाते हैं. देन एज यू कैन सी इवन इन द पिक्चर दे हैव swollen abdomen and hairs turn red. हेयर्स रेड हो जाते हैं एंड उनकी ग्रोथ रुक जाती है, रिटार्ड ग्रोथ. ओके, सो इसका क्योर क्या है? व्हाट इज द क्योर? क्वाशियोकोर कैन बी क्योर्ड बाय गिविंग प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट रिच फूड टू द पेशेंट. सो उनको ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है. सो दिस वाज ऑल अबाउट क्वाशियोकोर. Now let us read about marasmus. Now marasmus is also caused by the deficiency of protein and carbohydrate. What are the symptoms? Symptoms are very much kind of those shown by child suffering from kwashiorkor. Another thing that is not there in kwashiorkor but it is there in marasmus is the child becomes so thin that loose fold of skin can be seen all over the body and muscles get wasted. As you can see in this picture, क्या होता है? इनकी स्किन इतने लूज हो जाते हैं कि उनके जो फोल्ड्स हैं स्किन के वो दिखने लगते हैं. तो मसल्स पूरा वेस्ट, लाइक मसल्स विल गेट लूजन. ओके, now what is the cure? Again marasmus can be cured by giving protein and carbohydrate rich food to the patient. जैसे कि हम जानते हैं कि these are the diseases that is caused by deficiency of protein and carbohydrate की वजह से ये PEM हो रहे हैं. इसीलिए पेशेंट को ऐसा खाना प्रोवाइड करना है जिसमें ज़्यादा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है. ठीक है. Now moving on to deficiency of vitamins. The diseases caused by the deficiency of vitamins are called vitamin deficiency diseases. जो बीमारी विटामिन के कम होने से होती है, those diseases are called vitamin deficiency diseases. Now here I have mentioned few of the vitamin deficiency diseases with their symptoms. For example, विटामिन ए. विटामिन ए की कमी की वजह से डिजीज क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस.
symptoms. What are the symptoms? Unable to see in dim light. Dim light में वो ठीक से नहीं देख पाता. Similarly, if you take vitamin C, vitamin C causes scurvy. Next, vitamin D, it causes ricket. Ricket में क्या होता है? Twisted, soft and bent bones. उनके bones बहुत ही soft हो जाते हैं. ठीक है? So these are few of the diseases that cause because of the deficiency of vitamins with their symptoms. Okay? Now we will discuss about deficiency of minerals. The diseases caused by the deficiency of minerals are called mineral deficiency diseases. So जो diseases minerals की कमी की वजह से होती हैं, those are called mineral deficiency diseases. Now minerals needed by our body are classified into two groups. Majorly वो classified होते हैं दो groups में. One is major minerals and trace minerals. Trace minerals means जो कि हमें थोड़ा कम अमाउंट में चाहिए, and major जो मेजरली चाहिए, थोड़े ज़्यादा अमाउंट में चाहिए. तो मेजर मिनरल्स includes calcium, phosphorus, sodium, potassium, etc. And trace minerals contains iron, iodine, zinc, magnesium, etc. Okay, so here I have mentioned few of the major mineral deficiency diseases. Let us take for example calcium. अब कैल्शियम की वजह से क्या होता है, हमारे जो बोन्स होते हैं वो बहुत वीक हो जाते हैं, एंड मसल मूवमेंट्स, एक्सेसिव ब्लीडिंग, ये सब की प्रॉब्लम्स होती हैं. ठीक है, एंड डिजीज क्या है, रिकेट. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू आयरन. आयरन की कमी की वजह से व्हाट डिजीज वी हैव टू फेस, दैट इज एनीमिया. सिमिलरली फॉर मैग्नीशियम, इन केस we get less of magnesium than it's required for our body, we will suffer from high blood pressure. Also take example of fluorine, it will cause tooth decay, मतलब हमारे दांत खराब होंगे. ठीक है, so these were few of the diseases caused due to the deficiency of minerals. Okay, so students, that is all about today's video. In the next video, we will discuss the exercise question of this chapter, as the explanation of this chapter ends here. And if you are new to my channel, do consider subscribing it and press the bell icon to get notified whenever I upload a new video. So, stay tuned and thank you.